ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ध्यानादे पुष्पं दुर्वानुपुरां तुलसीदलं समर्पयामि। श्रीमद्भागवतार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अतः श्रीमद्भागवत महापुराणं दशम स्कन्ध अथ षट्त्रिंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच अथ तर्ह्यागतो गोष्ठमरिष्टवृषभासुरः महिमहाककूत्काय कम्पयन् खुरवीक्षतां रम्भमाणखरतरं पदा च विलिखन् पहिम् उद्यम्य पुच्छं प्राणि विषाणाग्रेणचोद्धरन् किञ्चित् चक्रिन्मुञ्चन् मूत्रन् स्तब्धलोचनः यस्य निर्हादितेनाङ्गनिष्ठुरेण गवामृणां पतन्त्यकालतो गर्भा स्रवन्ति स्म भयेन वै निर्विशन्ति घना यस्य कुकुद्य जलशङ्कया तं तीक्ष्णशृङ्गमुद्वीक्ष्य गोप्यो गोपाच तद्रशो पशवो दुद्रुवुर्वेदाराजन् सत्यं च गोकुलं कृष्ण कृष्णेति ते सर्वे गोविन्दं शरणं ययो भगवान् तद्वीक्षं गोकुलं भयविद्रुतं मा भयिष्ठेति गिराश्वास्य वृषासुरमुपाहवेत् गोपालै पशुभिर्मन्द त्रासिदैकिमशतम बलदर्पदं दर्पहाहं दुष्टानं तोद्विधानं बलदर्पदाहाहं दुष्टानं तोद्विधानं दुरात्मनाम् इत्यास्फोट्याच्युतोरिष्टं तलशब्देन कोपयन् सङ्ख्युरं से भुजा भोगं प्रसार्य वस्तु हरि सोप्येवं कोपितोरिष्ट खूरेण वनिमुल्लिखन् उद्यतपुच्छ भ्रमन्मेघं क्रुद्धः कृष्णमुपाद्रवत् अग्रण्यस्तविषाणाग्रह स्तब्धः श्रीगलोचनोचितं कटाक्षेप्याद्रवत्तूर्णमिन्द्रमुक्तो सनिरेथा गृहीत्वा शृङ्गयोस्तं वा अष्टादश पदानि सह प्रत्यपवाह भगवान् गजः प्रतिगजं यथा सौभविदो भगवता पुनरुत्थाय सत्वरा आपतत स्विन्न सर्वाङ्गो निःशोषण कृतमुचिता तमापतन्तं च निगृह्य शृङ्गयो वधा समाक्रम्य निपात्य भूतले निष्पीडयामास यथार्द्रमम्बरं कृत्वा विषाणेन जघान शोभतत् अश्रीगमनमुद्रसकृतसुमुसृजन् शिल्पं च बाधानवतिस्थितीक्ष्णः जगामकृत्सं निरितेरदक्षयं पुष्पै किरन्दो हरिमीडिरेशुरः एवं ककोब्दिनं हत्वा स्तूयमानः सुधातिमे विवेशगोष्ठं सबलो गोपीनां नयन सभा हर्षणीयते कृष्णेन अद्भुतकर्मणा कंसायदा भगवान् नारददेवदर्शन यशोदाय सुतां कन्यां देवक्या कृष्णमेव च रामदुरोहिणी पुत्रं वसुदेवेन विवेदा न्यस्तौ सौमित्रेण देवय्याभ्यां देवव्रजहत निशम्य तद्भुजवते गोपात् प्रचलितेन्द्रिया निशातमसीमा दत्ता वसुदेवाजिगांसया निवारितो नारदेन तत्सोतौ मृत्युमात्मनः ज्ञात्वा लोमये पाशैर्भवन्तः सभार्या प्रत्यादितो देवर्षौ कंसाभास्य केशिनं प्रसयामास हन्यतां भवता रामकेशवौ ततो मुष्टिकचाडूर सलतो सलकादिकान् आत्मायन हस्तिपां चैव समाहूय भुजरान् भुवो निशम्य तामेतद् वीरचाडूरमुष्टिकौ नन्दव्रजे किलाशाते श्रुतावानकधनुवे रामकृष्ण ततो मह्यं मृत्युः किल निदर्शिता भवद्भ्यामिह सम्प्राप्तौ अन्यतां मल्ललीलया मञ्चा क्रियन्तां विविधा मल्लरङ्गपरिचिता पौराजनपदा सर्वे पश्यन्तु स्वैरसंयुगं महाभात्र त्वया भद्र रङ्गद्वायुर्वनीयताम् द्वीपकुवलया पीडो जहित्येन ममाहितौ आरभितं धनुर्यागात् चतुर्दशमिताविधि विशसन्तुपसन्मेध्यान् भूतराजाय मीढुषे इत्याज्ञप्यार्थतन्त्रज्ञ आहूय यदुपङ्गमं गृहीत्वा वाणिना वाणीं दातृ क्रूरमवादः भोवनर्मदे मह्यं क्रियतां मैत्रमादृतः नान्यस्तोत्तो हि ततमो मिद्यदेवो जपृणितो अतस्त्वामाश्रितः सौम्य कार्यगौरवसाधनं यतेन्द्रो मिषमाश्रित्य स्वार्थमध्यमक
गदगमदविभो गच्छन्नन्दवजं तत्र श्रुतावान् गदन्दवे आसारे दाव्यानेन रथेन नयमातिरं निश्रेष्टा किल मे मृत्युर्देवैर्वैकुण्ठसंश्रये दावानय समं गोपैर्नन्दादेशाभ्युपायनै घातैश्च ईहात्नीतौ कालकल्पिनः हस्तिना यदि मुक्तो मल्लैर्घाते घातये वैद्यतोपवै तयोर्निहतयोस्तप्तान् वसुदेवपुरोगमान् तद्बन्धुन्निहविष्यामि वृष्णिभोजदशार्हकान् उग्रसेनं च मित्रं स्थविरं राज्यकामुकं तद्भ्रातरं देवकं च एजान्ये विद्विषो मम ततश्च महिमित्र भविद्रिनष्टकण्डका जरासतुर मम गुरुर्विवेदो दयितसखा शम्भुरो नरको बाणो मयैव कृतसौहृदा दैरहं शूरभक्ष्यान् हत्वा भोक्ष्ये महिं निभान् एतत् ज्ञात्वा नय विप्रं क्षिप्रं रामकृष्ण विहार भगौ धनुर्मुखनिरीक्षार्थं द्रष्टो यदुपुरश्रियम् अक्रूरोवाच राजन् मनिषितं सद्र्यक् तव स्वावद्यमार्जनं सिद्ध्यो समं कुर्यात् दैवं हि फलसाधनम् मनोरथान् करोत्युच्चैर्जनो दैवहतानपि युजति हर्षशोकाभ्यां तथाप्याज्ञां करोति मे श्रीशुकोवाच एवमादिश्य क्रूरं मन्त्रिणश्च विसृजसः प्रविवेश गृहं कंसस्तथा क्रूरसोमालयम् ओम जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमसंहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे क्रूरसम्प्रेषणं नाम षट्त्रिंशः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। नमो भगवते वासुदेवाय।